Being a second year undergraduate, like in my third semester, he liked the approach. But you should be motivated enough to work with me. बोले कि मैं खुद वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, मेरा घर न्यूयॉर्क में है और मैं MIT है कैम्ब्रिज में, बोस्टन में, तो आई एम नॉट एबल टू गो एवरी डे. Hi Shashwat, welcome to Indian Alumni. Let's start this video. Can you briefly introduce yourself and share a bit about your academic journey leading up to IISER Bhopal? Because you are studying at IISER Bhopal, right? Yeah, so we can yes. start from this one. Yeah, I'm Shashwat Sourav and I'm currently a data science major. I'm currently in my fourth year, my last year of my bachelor's degree at Indian Institute of Science Education and Research Bhopal. Leading up to my way to IISER Bhopal, I think it's been quite interesting. So when I started in my 11th and 12th grade, in my senior secondary high school, so there was this passion about science, and at that time the only institute I knew about was Indian Institute of Science Bangalore and IIT Bombay. So these were the two targets for any high school students. They try to get into these institutes, so I was also one of them. So I gave my joint entrance examination for engineering, JEE Advanced, and I was not able to secure a very good rank to get into IISc Bangalore or even IIT Bombay. I had to then search for other options where to pursue a career in research. I had some financial constraints, so it was about getting into a central government college so that the tuition fees will be very low. So I got about these got to know about these IISERs, and then in Bhubaneswar, in my hometown, we have NISER also, National Institute for Science Education and Research. So I appeared for this IISER aptitude test, and then I applied for admission. So luckily, with my JEE Advanced rank, I was able to get IISER Bhopal BS Engineering Sciences. So that's a 4-year program, and once you finish your first 2 years, you can do a major in data science or in ECS, which is electrical engineering and computer science, and then chemical engineering. So finally, after my first 2 years, I chose to take up data science since I was more into computational astrophysics. So that's why I thought, and I was currently seeing people are kind of using machine learning and astrophysics together. So I thought it's the right decision to kind of upskill myself with data science tools and then also with physics. But I talked with a lot of professors who told that I think having a better programming background helps a lot as you move forward. So that was my main reason why I took data science as a major. Yeah, so that's how the journey has been, kind of in a nutshell. Yeah. Okay, so that means you are doing your undergrad, right? Yes, I'm in my undergraduate. Okay, so you are basically from Odisha, Cuttack, Yes. Odisha. Yeah, Cuttack. Yeah. Also, okay, ठीक है. Cuttack से आप कहाँ से? So Cuttack, we have this Buxy Bazaar. So it is अच्छा, kind of Buxy the heart of Cuttack. So all the shops and all, whatever you want, you can get there in Cuttack. So I'm from Yeah, that place. because I was staying in Cuttack, so yeah, I can relate it. So आप Okay. उड़ीसा से है तो हम फ्यूचर में जब आपका अंडरग्रेड कंप्लीट हो जाएगा हम लोग के गोडिया लैंग्वेज में एक पॉडकास्ट करेंगे Sure, क्योंकि sure, sure. रिसेंटली आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट ए न्यू सीरीज स्पेसिफिकली ओडिया लैंग्वेज जो लोग Okay. फॉरेन में हैं या जो लोग कुछ कर रहे हैं कुछ मतलब लगेगा कि द कंटेंट विल बी यूजफुल Yeah. फॉर फ्यूचर तो उसको मैं ओडिया हमारा रीजनल लैंग्वेज में करना चाहूंगा. So you are from तो Odisha, like native? यस या Oh, फ्रॉम okay, जगतसिंहपुर. okay. Oh, my grandfather's village is in Jagatsinghpur. Yeah, there's this place called Tordapada. I knew it. Yeah, Tarodapada Yeah, ITI. yeah, ITI, yes, yes. Okay, okay, first that means you are doing at Niger, right? First, No, so no, you actually, directly got admission at IISER Bhopal. yeah, so NISER has a different examination. So I chose Okay. to appear for IISER aptitude test. So through that, I got into IISER. So where were you were doing your schooling? So I was doing it at DAV Public School, CDA Sector 6. It's Okay. in Bidanasi. Yeah. Okay. Then that means why did you choose to study data science along with a minor in physics? Means you are doing minor in physics, right? Yeah. So why? Is there any So specific reason behind this or just like सब कोई कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे? no, so basically, पहले क्या हुआ, like first second year में, so I was very much interested in, like in school I was very much into chemistry. It was kind of like organic chemistry is my strong point. So in future also I will move with it. So what happened was when I came to IISER, so I started reading about astrochemistry and all. How, because people are doing a lot of work on astrophysics.
So I started reading about astrochemistry. So I had this Dr. Anshuman Acharya. So he's doing his PhD at Max Planck in Gazing. So I came in contact with him, and he told me that it's not like a very much difference between astrophysics and astrochemistry. So I started studying, like in my first year, I started reading about some literature, like research papers and all, to kind of know what background is actually needed to kind of succeed in this field and to do higher studies. The main thing that I noticed was people are making a lot of plots. So they're trying to show how if there's a black hole and there's a supernova explosion, how you can show it with the use of programming. So how you can like collect data from telescopes, ground-based telescopes, and then make a sky map of some gamma ray bursts or some sources which emit some certain radiation like X-rays or something. So that kind of helped me understand that programming is kind of more important than having a background in astronomy in general. So what happened was that I had this Professor Sukanta Panda, who is from Odisha only. So he's at IISER Bhopal. So he said me that the main issue which professors face in general is programming only, because that's why you see a lot of research groups, they will have students who are very much familiar or have a strong background in programming. They might not have a undergraduate background in physics or let's say in astrophysics, but they have a very strong programming background, and that is very much essential for succeeding in this field, because people want to visualize how these kind of phenomena are happening. So if there's a gamma ray burst happening somewhere or there's a supernova explosion, how it's happening, what is the time, at what time scale it's happening, people want to see these things rather than just giving a theoretical explanation like a mathematical equation that this is the kind how the gamma ray radiation is happening. People are not kind of getting a feel about how it's actually happening. And having these kind of complex mathematical equations, let's say you're a naive reader, you don't know anything, you just pick up that paper, you're trying to understand what is happening, it will be very difficult for you. So that kind of helped me understand that it's better I shift my focus towards becoming a better at handling data from telescopes, or even in general, like starting I try to handle housing price data from different localities, neighborhoods. And then sort of I got to understand that machine learning and getting into artificial intelligence is very important, like collecting data and trying to run algorithms, machine learning algorithms on your data sets. What you collect from these telescopes is very important to give these kind of visualizations to people if they want to get a feel about that particular topic. So that's the main reason why I chose to have a DSE major and then think of a physics minor. So physics minor, basically, I wanted to strengthen my classical mechanics, my core fundamental physics topics, which are essential to understand the mathematical equations you see in research papers and all. And then data science is important to kind of handle the data, because there's a lot of astronomical data. You see these ground-based telescopes. There's a lot of data. Like you will see data sets having 6,500 rows and thousands of columns. So you should know how to handle this kind of big data. And for that, having a background in data science is very important. So yeah, Okay. that was the main reason. Okay, then for the next question, actually, how does IISER Bhopal support your unique academic interest? Because it's let me complete because it's a little bit unique, right? Because when I was searching Indian students, so you mentioned your profile like in LinkedIn, you are you are doing a research assistant at MIT, blah blah things. But that time I saw when I get to know you are from Odisha. Okay. Nowadays you can share your experience. How many students are using LinkedIn actively in their undergrad? Can you tell me how many of your friends? Because when I was doing undergrad, still now I am doing masters. Okay, it's my maybe third masters, like that. You can say second masters. There are so many students who are studying abroad, but still they are not using LinkedIn actively. But you are doing undergrad in India. Okay, and you are actively using LinkedIn. So how many people's using it in your circle, and why you are using it? So LinkedIn idea, I didn't have that in my mind. It's my elder sister who told me about using LinkedIn. So I personally, I don't like social media in general.
Okay. So for me, WhatsApp also, like I was kind of forced to come into WhatsApp because Mm-hmm. all the contacts and all chatting and all it happens there only. Mm-hmm. So my sister told me that's a good website. It's a professional website. You should be there. You should contact professors and all. They all are there. So I was like, okay, let me try it. So around I think in December 2021, I first opened my account and then I started and I saw that some of my seniors from 2019 batch, they were already there. Even before I started actively using LinkedIn, some people already knew about LinkedIn and how to use it. But when initially I was like started using it, I was very like, it's a nice website and all the interface and all and people posting about they're achieving this, they're doing that, and professors posting that I have these open positions for PhD, for masters. So I was like, this is nice. This is kind of not a waste of time. But if I invest some time, I think I can get good return from this website. Then I was like, I started searching for professors and all who are working in my domain, and I also got in contact with certain PhD students from US and even Europe to just get suggestions of how to pace my undergraduate degree and then how to make a transition to, let's say, an MS or a PhD, because during December 2021 I was still, I think, in my third semester, like second year. I had just started my second year, so still I was learning a lot of things about in general how academia works. Gradually people started coming into LinkedIn, like about your question about how people are actively using. Then Means my question is in your circle because yeah, there are so many people I'm talking about particularly in India. yeah, yeah, There are very rare students yeah. who are using LinkedIn in their undergrad. I don't know how much. I mean, I can't completely agree with this statement because nowadays I'm seeing even people who are in like taking coaching for IIT JEE, they are Mm-hmm. also opening one account on LinkedIn. Means they are using it means actively completely rather So than yeah, I think Instagram. the main reason why they're using it, like if they see someone, so they already Indian students have this kind of a, like MIT jana hai and Harvard jana Mm-hmm. hai, ye sab. So if they see Mm-hmm. someone who has that kind of like company name, he's working at MIT or let's say somewhere in Europe also, like Max Planck or something. Mm-hmm. So they will start texting him on LinkedIn like, hello, how are you doing and how did you get into this? Even though it's not at all necessary at this stage, like in 11th or 12th grade, you should focus on your school exams and your upcoming entrance exams. But still, they open the account and start asking questions which are not necessary. So, I Okay, mean, that means maybe you are right. Yeah, that means maybe because when I was doing it, मतलब वो कोई यूज नहीं कर रहा, सब कोई फेसबुक इंस्टा में थे. yeah, I mean, तो like कोई now also watching reels on Instagram is very popular. So, I mean, it's very difficult to beat that, but no, people are using LinkedIn now a lot, like even high school students. ओके 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 दैट मीन्स मैं भी थोड़ा मतलब अपडेट नहीं हूँ ग्राउंड के साथ एक्चुअली ग्राउंड में क्या हो रहा है. मैं भी मेरा सर्कल में ऐसा था लेकिन अभी जो जेन जी हैं जो Yeah, स्कूल yeah. किड्स हैं लाइक कोई भी जो बैचलर्स कर रहे हैं जो मास्टर्स भी कर रहे हैं इंडियन स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर यूजिंग लिंक्डइन बट लिंक्डइन इज द राइट प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट द टैलेंट. हाँ, हाँ, You will not get the proper talent in Instagram, हाँ, yeah. but if you want to find someone then the LinkedIn is the right platform. So Yeah, yeah. ये क्योंकि ये एक मतलब मुझे जब आपको मतलब जब आपके साथ मैंने कनेक्ट हुआ मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुआ कि नहीं स्टिल पीपल आर यूजिंग दैट मींस यू आर लाइक काइंड ऑफ मुझे लगता है लिंक्डइन में जो एक्टिव है ना वो थोड़ा जीनियस होगा क्योंकि उसका कुछ तो करने का मतलब सोच है. हाँ नहीं, दैट्स like व्हाई. I mean LinkedIn, like people stalk also on LinkedIn. Like इसका प्रोफाइल देख लिया, ये कैसा किया है, देन उसको पिंग कर दो मैसेज करके कैसे किया. बट it's, I mean, that is the way the website works. It's for that only, to connect with people and to find jobs easily. But still I feel that for academia, Twitter is better. I mean, the number of professors you see on Twitter, that's more on LinkedIn, because I don't know the reason, but that's what I have seen. So Yeah, I have Twitter not is opened. boosting also. Yeah, but the thing Yeah, is, if you compare about the entertainment and education, yeah. for the Instagram, yeah, LinkedIn Instagram is better for kind of, education. Yeah, I yeah, mean, far better than because Instagram. इंस्टाग्राम में जो लोग जा रहे हैं उनका एक ही मकसद होता है मतलब फॉर द गेटिंग द एंटरटेनमेंट. राइट, वहां पे हाँ, कोई yeah, yeah, एडुकेशन, हाँ एडुकेशन है, सोशल एडुकेशन वहां पे है. बहुत सारा भी हाँ, रील्स आ रहा है, बहुत सारा पॉडकास्ट हो रहा है, दैट इज द थिंग डिफरेंट थिंग. बट लिंक्डइन में
आपको कोई फोन नजर में नहीं आएगा। और अभी थोड़ा थोड़ा हाँ लिंक्डइन में आ रहा है, कोई पोस्ट पिक्चर पोस्ट नहीं करता है लिंक्डइन में, अभी नहीं, कर पर रहे हैं। फिर भी अगर आप देखोगे ना, लिंक्डइन धीरे धीरे फेसबुक बन ही जाएगा। लाइक हाँ, पीपल राइट आर राइट राइट। स्टिल पोस्टिंग देयर फोटो, फैमिली फोटोज एंड ऑल दैट, आई डोंट नो व्हाई, बट वो होता है सबका जो। बिकॉज लिंक्डइन खुद अभी उसको बूस्ट करवाना चाहता है, वो भी चाहता है कि मेरे पास सब कोई आए, मतलब एक हाँ लाइक सब हाँ, कोई इट्स काइंड कोलाब ऑफ करना क्रिएटिंग चाहता है थॉट। अ हाँ, अट्रैक्शन टाइप ऑफ, या। सो इसलिए लिंक्डइन वीडियो वगैरह भी, लेकिन फिर भी उसका जो रूट है वो रूट पे अभी भी है। जैसे उसका जो इंटरफेस है वो ज्यादा आपका हाँ एकेडमिक के बारे में आपको पूछता हाँ, है। वो तो है, या Okay, so then let's back to our topic. Okay, या so that's a question means how does IISER Bhopal support you? Means you सो can say about the academic. I think like support आपको like in the first 2 years you won't feel it. You have to work hard on your own self because like professors don't know you much. And for me it was completely online. The first 2 years, because of the COVID, it was completely online, so it was difficult. Like even if you turn on your mic and try to give an answer to any question, the professor hardly will pay attention to that, because they have a lot of, there are almost 100 200 students in one particular Zoom room or even a Google Meet. So it's very Mm-hmm. difficult. So but I think you can still like I was asking questions to professors over email about how this and that, my doubts. So from that, they kind of got an idea about me, like kind of recognized me that okay, this student is there. Then there was this, we have this NIUS fellowship, like National Initiative for Undergraduate Sciences, that is conducted by Homi Baba and then Tata Institute for Fundamental Research, TIFR, Mumbai. So during that time, I needed recommendation letter from two people, one my school teacher and one from my university professor. But it was not necessary that you get the LOR from university professor. You can also ask from your school teacher, because they knew that that the student is in his first year, so he may not have that kind of an interaction with the professors at the institute. And it was COVID, so they had put this condition that you can also ask for letter of recommendation from your the school teachers also. So luckily, Dr. Suvankar Datta, he was taking my mechanics course, and he kind of had. I was asking a lot of questions to him on how this and how that. So he kind of had a good impression on me. So I asked him for a letter of recommendation. So then he was kind of hesitant in the first mail, but after two or three requests, he was ready to give me. So luckily, I got selected for that camp and I attended it. So I feel that it's more than the institute; it's about the professors who are there. I think that because ultimately the system that's there, the education system, that's kind of dictated by professors only, and these are the people who sit in the authority and all, they decide what to do next, what is better for the university. So I think they have helped a lot. Like even now in my third year, so I'm in the data science department. I get a lot of support from my head of the department, so Dr. PB Sujit. So he encourages me a lot. Like when people came to know that I have published two research papers in my third year itself in top journals, so people were kind of skeptical. How can this guy do this? So at that time, he kind of contacted me, and we had a nice discussion about how I got all these collaborations at MIT, at Japan. So he was like, keep working hard. This is really good. I think having the support of your HODs really gives you a lot of encouragement. So IISER Bhopal has helped a lot. So ये जो आप अभी जो बोले जो रिसर्च पेपर के बारे में, ठीक है, Yeah, उसके बारे में हम बाद में थोड़ी अभी हम एमआईटी के बारे में डिस्कस करते हैं। yeah. तो एमआईटी में जो आप रिसर्च असिस्टेंट का जो काम करता है, आप एमआईटी गए थे या ऑनलाइन हो रहा था कुछ? नहीं, वो ऑनलाइन ही था। अभी भी वो ऑनलाइन ही चल रहा है रिमोटली, क्योंकि हम्म मेनली दिक्कत क्या है कि यूएस में आपका द सिस्टम इज यू हैव टू बी देयर टू बी फंडेड। हम्म सो एंड आप अगर मास्टर्स प्रोग्राम भी देखोगे यूएस में, दे आर नॉट फुल्ली फंडेड। तो बहुत देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज। सो आई मीन देयर वाज दिस प्लान टू गो फॉर 1 month ओनली टू एमआईटी, बट दैट आल्सो हैड टू कैंसिल, क्योंकि लिविंग कॉस्ट जो यूएस में है दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। And even this year also, I got this DARD-wise fellowship to go to Germany. So हम्म University of Heidelberg. So I was selected to work with Professor Andreas Just. हम्म So the problem was the landlady asked me for 700 euros per month.
which was kind of really very big amount just for a single room. And That I was who means when did that happen? so basically we had our results in February, who all are selected, and then the DART office New Delhi told us that you have to find your accommodation on your own. So initially I had faced a lot of issues in just finding a room, and then I had some contact with other students who were selected just to kind of share a room on sharing occupancy. But the landlady said it's 700 euros. So I was like, 350, 350, it's fine. Two of us can manage. But unfortunately, that guy, he kind of, he had another guy from his own institute, so he went with him. So I was unable to, because the fellowship was of like 930 euros per month. And if 700 euros is going just for, accommodation per month, I'm left with 230 euros. And I was reading, Okay. how much is required for surviving in That Germany. means you dropped that plan. Yeah, I declined it. Yeah, I had to decline it. That's why I am doing it because in at University of Heidelberg, okay, that's Yeah. why community is necessary. Maybe you are not connected to Indian community. Yeah, the Indian No, diaspora there. actually, Because I had, like Dr. The Anshuman, who has been with me since he's doing his PhD at Max Planck in Mhm, Galching. So he had also got selected in the same university under the same professor, like mhm, in 2017. But that time he was saying that the accommodation was around, I think, 400 or max to max 500 euros. mhm, mhm. So now this additional hype of 200 euros, it didn't make any sense. Like, you are giving me the kind of a small room to stay. Yeah, that means So this sample that depend upon the individual deal to individual deal. Simple case, I am living in Berlin, right? yeah, yeah, Berlin and Munich is the expensive city in Germany, yeah, 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 in the whole Germany, right? yeah, yeah. So I am paying 500 euro in the sharing only, okay? But Okay, that fine. depends. Some people are also giving 350 in the sharing. Some people are also getting a room five means single room in 500. That Okay, depends, like deal to deal. okay. What I am trying to explain that when you are contacting like maybe आपको सही चैनल नहीं मिला जिसके थ्रू आप अकोमोडेशन सर्च कर पाओगे मे बी Maybe like we I had this like हम लोग सब एक साथ ही सब कुछ कर रहे थे, like मेरे साथ और भी 9 बच्चे सिलेक्ट हुए थे टू गो टू जर्मनी एंड वर्क एज एन इंटर्न. बट बात है कि मेरा और एक मेरा बैचमेट है, तो वो भी नहीं जा पाया बिकॉज उसको डॉटमंड में एकोमोडेशन ही नहीं मिला. तो वही तो दिक्कत उसका क्या है जो करेंटली जो स्टूडेंट है देख प्रॉब्लम जैसे हाँ, जैसे आ, अभी मैं अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी सितंबर इनटेक के लिए आ रहे हैं राइट अच्छा, हाँ, हाँ, जैसे मास्टर्स के मतलब लिए. सितंबर इनटेक इज द मेजर इनटेक फॉर बैचलर्स मास्टर्स फॉर पीएचडी एंड फॉर ओके. एवरी फील्ड ऑफ स्टडी एंड द रिसर्च हाँ, एवरीथिंग हाँ, तो वी कैन से अकोमोडेशन मिलना इंडिया से रहते हुए हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट होता है एग्जैक्टली, हाँ. अलग जब हम जर्मनी में आए थे हमें कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली मिल जाता है वहाँ पे जब यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स है जैसे अच्छा, कि आप जब मतलब यहाँ पे आते हो तो आपको बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप इंडियन स्टूडेंट्स का ग्रुप हो गया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ग्रुप है वहाँ पे आपको बहुत सारे ग्रुप्स मिलता है हाँ, हाँ, राइट देयर यू कैन गेट टेम्पोररी अकोमोडेशन ऑल्सो फॉर फाइव ओके, मंथ्स फॉर 4 मंथ्स तो हम्म, अकोमोडेशन लेना एक चैलेंज है हाँ, इट डेफिनेटली बिकॉज राइट नाउ जो क्राइसिस यूक्रेन रशिया हाँ, वार तो हाँ, इट्स वो वेरी सब चैलेंजिंग एक्सपेंसिव हो गया है, हाँ, उसकी वजह से. लेकिन फिर भी मतलब विद इन 500 यूरो या 400 यूरो यू कैन गेट शेयरिंग रूम इजीली एनी पार्ट ऑफ द जर्मनी any अच्छा. part of the German. It's completely, but the thing is, but it's not easy. It depends upon the deal to deal. हम्म, So you have to contact different so many students uh, until you find the place. That is the only हम्म, mantra you can हम्म, say. So because हम्म, when means you told me like you drop this plan because of accommodation, that time I saw means that means still now students are facing big because जब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं ना हमें पता नहीं होता एक्चुअली प्रॉब्लम क्या अभी मतलब करेंटली क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है हाँ, like like इंडिया में क्या है ना, like you get things easily, like like या it's easy to survive, like थोड़ा सा पैसा कुछ ना कुछ you can manage somehow, you can have contact with people. But other यूरोप यूएस में वैसा नहीं चलता. I mean, it's difficult. yeah I can I understand mean, because you are yeah, in the undergrad you are मतलब फर्स्ट टाइम मे बी यू आर प्लानिंग टू डू दिस थिंग्स और मैं yeah, यहाँ पे 3 साल हूँ तो मुझे थोड़ा मैं इसमें थोड़ा यूज टू हो गया हूँ
हाँ हाँ जैसे अभी सपोज अभी मैं डिफरेंट सिटी में जाऊंगा, राइट? जैसे लाइक मैंने अभी क्या हुआ था कि मैं इजिप्ट गया था अभी, तो हम्म लाइक फॉर 2 वीक्स। तो मुझे ट्रैवल ग्रांट मिला था, तो गिव अ टॉक, जो अभी दो मेरे पेपर्स हैं उसके बाद में गामा रे बर्स्ट के ऊपर डिस्कस करने के लिए। सो दे उन्होंने मेरा एकोमोडेशन का कॉस्ट पूरा कवर कर लिया। लाइक हम्म मुझे एक 4 BHK का फ्लोर मिला था, उसमें लाइक विंडो, लाइक इट वाज काइंड ऑफ लाइक सूट जैसा, ड्राइंग रूम प्रॉपर। एंड आई वाज हम्म लाइक like till that time I was regretting not going to Germany because of accommodation. But I was यस thinking यस यस like, yes, Egypt is not kind of a hyper like country like Europe, but still they were able to give me a nice place to live and in an expensive. So they have this new Cairo and old Cairo in the capital. So still they were able to give me a nice place in the new city, and that one expensive also, but I didn't have to pay anything. हम्म तो लाइक उस टाइम तक मुझे रिग्रेट था कि मैं जर्मनी नहीं गया एंड ऑल, बट उसके बाद नहीं, लाइक आई मेड द राइट डिसीजन। तो बट लाइक ये चीजें अंडर ग्रेजुएट्स के साथ होती हो सकती है, बिकॉज लाइक मास्टर्स एंड पीएचडी स्टूडेंट के साथ दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग इज वेरी रेयर, लाइक रेयरली होता होगा, क्योंकि फुल्ली फंडेड होता है सब कुछ, एंड इट्स अ 2 years एंड पीएचडी इज लाइक अ 5 year कमिटमेंट लाइक दैट। So universities take a lot of more, they are more careful about these things. If the student is coming for the masters or the PhD, so yeah, the यही मतलब this is how the things go. नहीं, regarding the accommodation, actually for the masters also same thing. Regarding the accommodation, students need to take care of the accommodation. इंडिया में Okay, ऐसा क्या होता है, अच्छा, हॉस्टल आपको मिल जाएगा, ऐसा हाँ नहीं है। हॉस्टल मिल जाएगा, हाँ हाँ। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट्स है for students also. There are so many websites in the government websites. There you can अच्छा, get the accommodation within 230 euro, 240 euro. But still, there are so many students are trying, so you need to be stay in maybe in waiting list. But या apart from this, student को मिल जाता है, क्योंकि ये हम्म, एक प्रोसेस है। सो या दैट मीन्स अकोमोडेशन एक्चुअली, जैसे मैं अभी रेकमेंड क्या करता हूँ मेरे स्टूडेंट को, जैसे मेरे पास बहुत सारा कॉन्टैक्ट आता है इसके रिगार्डिंग। हाँ सिंपल जी जी, मैथमेटिक्स है। इफ यू आर नॉट गेटिंग accommodation, don't think you will not get it. Okay, first you हाँ have to book a hotel or Airbnb. हाँ If you are not या getting it, हाँ stay एयरबीएनबी, there हाँ। for stay हम्म, there for 30 days. Okay, यस 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 यस, during हाँ the 30 समझ days गया, you will get definitely something. हाँ समझ गया, हाँ Maybe, यही स्कीम है एयरबीएनबी पहले, हाँ। हाँ, तो एयरबीएनबी आप रह जाओ, एयरबीएनबी पे रहने के बाद 30 डेज आप रह जाओ या 15 डेज बुकिंग करो। मैंने जी जब जी इटली आया था, जी जी, मैं अभी राइट नाउ आई एम लिविंग इन जर्मनी, सो व्हेन आई वाज इन इटली, ओके, ओके, मुझे भी कोई अकाउंट से पता नहीं था, तो मैंने सिंपली booking.com में हॉस्टल बुक किया। अच्छा, ओके, जो हम्म, डोरमेटरी हॉस्टल्स होता है वो हाँ समथिंग पर डॉर्मेट्री, हाँ नाइट हाँ, 15 यूरो समथिंग था। अच्छा, तो मैंने हॉस्टल 15 दिन रुका, मुझे अकोमोडेशन नहीं मिला। फिर से 15 दिन अच्छा, लगेज लेकर के दूसरे हॉस्टल में गया। हॉस्टल में एक प्रॉब्लम क्या होता है, आपको खाना भी होटल में खाना पड़ता है। नहीं तो फिर मैं हाँ थोड़ा वहां पे माइक्रोवेव था, कुछ ड्राई फ्रूट्स खा कर, मतलब थोड़ा जैसा स्टूडेंट को मैनेज करना हाँ पड़ेगा हाँ फाइनेंस। जी जी, समझ रहा हूँ जी, लेकिन आफ्टर मे बी 1.5 months, देन हम्म, फाइनली आई गॉट ए रूम। तो ओके, सपोज मैं यही सोच के इंडिया में रह जाता, तो चैलेंज होता है, लेकिन बिकॉज मैं एक रेगुलर कोर्स में आया था, तो आप एक लाइक यू आर कमिंग फ्रॉम लाइक फॉर द एक सेमिस्टर और एक प्रपोजल के हाँ लिए आ रहे हो, तो देन इट इज डिफरेंट थिंग। हाँ हाँ, बट आई विल सजेस्ट यू नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर गेटिंग समथिंग, don't afraid regarding accommodation because you will get it. या आई मीन, Because हाँ there, yeah, you need to be there. But it little bit a trauma because accommodation नहीं होता, दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता है। हाँ, वो एक चीज मतलब, वो एक टेंशन जैसा बन जाता है। आई मीन दैट इज द Yes, मेजर yes, थिंग यू नीड। yes, आई मीन तो yes, आप कोई भी जगह जाओ, यू नीड समवेयर टू लाइक बस एक बिस्तर चाहिए और एक टेबल चाहिए, काम, यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, यू नीड इट, टेबल एंड yes, चेयर, yes. बेड। तो वही है कि आई मीन वी वर ट्राइंग टिल लास्ट मार्च तक, मैं ट्राई किया खींच खींच के, देन आई मीन आई रैन आउट ऑफ पेशेंस, आई वाज लाइक छोड़ो इसको। तो आपने तो डांस फेलोशिप छोड़ दिया? हाँ, डार्ट फेलोशिप मैंने छोड़ दिया। ओके, तो देन अभी आपका करेंटली रिसर्च चल रहा है एमआईटी में या वो खत्म हो चुका है? नहीं, एक्चुअली द प्रॉब्लम इज कि हमने जो पेपर अभी सबमिट किया था, तो एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में, तो उसका रिव्यूअर ने कुछ कमेंट्स दिए हैं हमको टू इम्प्रूव ऑन। सो बेसिकली उसको अभी हमको 6 मंथ्स का टाइम मिला है टू काइंड ऑफ रिव्यू द अगेन, डू द वर्क एंड देन रीसबमिट अगेन विद इन 6 मंथ्स। तो बेसिकली अभी रीसब अभी उसी में चल रहा है काम। तो बेसिकली मेरा क्या है कि आई वर्क एट, आई मीन आई वर्क विद अ लॉट ऑफ प्रोफेसर्स। तो सेमेस्टर के टाइम पे भी मुझे अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ता है।
तो लाइक मेरा सैटरडे संडे जो होता है वीक का, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिवोटेड टू माई प्रोजेक्ट्स। एंड मंडे टू फ्राइडे हैव टू सी माई कोर्स वर्क, क्योंकि अभी एक्चुअली मैं टीचिंग असिस्टेंट भी हूँ दो कोर्सेस में। तो बच्चों के बीच बीच में इनका इवेल्युएशन करना पड़ता है, फिर कभी कभी लेक्चर भी देना पड़ता है। तो वीक डेज बहुत हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए। तो वीकेंड पे जो टाइम मिलता है, एंड मुझे भी प्रोफेसर यही बोलते हैं कि शाश्वत, यू नो, लाइक wherever you stay, whatever you do, if you are in academia, you are an undergraduate, publishing a paper in a good journal is the toughest thing you can do. So, you know, तुम कहीं आए, तुम कहीं गए, ऐसे फोटोज क्लिक करके लाइक घूमना, सोशल मीडिया पे डालना, लाइक पीपल डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बट अल्टीमेटली रिजल्ट क्या मिला तुमको? 3 महीने तुम जाके यू स्टेड इन अ कंट्री, you worked under a professor, what was the output? So let's say I'm an undergraduate, abhi I'm applying for PhD and all, I have to write what I did there, like let's say a simple poster presentation किया, या फिर कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड किया जहाँ पे मैंने अपना काम दिखाया। तो if you don't have those kind of things, then this selection committees, they get a lot of applications, they will see कि इस बच्चे ने 200 प्रोजेक्ट्स किए हैं बट कुछ उतना कुछ आउटपुट है नहीं, तो कोई फायदा नहीं है। वैसे तुम गए, अच्छा किए, वेरी गुड, यू वेंट टू अ डिफरेंट कंट्री, ब्ला ब्ला, यू डिड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, बट अल्टीमेटली तुम्हारा आउटपुट क्या है? यू हैव नथिंग टू शो, यू हैव नथिंग टू शो इन योर सीवी। सो यू नो यू शुड फोकस ऑन दोज थिंग्स। आई मीन, मुझे यही चीज बोला गया कि यू हैव टू ग्रो अप एंड यू हैव टू मैच्योर। तुमको अच्छा, मैं समझ गया। अभी उसको हम ऐसे भी एक मतलब कोरिलेट कर सकते हैं, या लाइक मतलब जैसे कि बहुत सारे चीज में इधर उधर दिमाग नहीं लगा करके एक चीज फोकस है, उसको कंप्लीट करो, हाँ, उसको एंड तक यस जाओ। एग्जैक्टली। आई थिंक दैट इज, यू नो, लाइक आप अगर यूरोप और यूएस को देखोगे, यूरोप में यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ प्रोफेसर्स, यू नो, लाइक stay focused and get the job done. This get the job done, that is very much prevalent in US. This is kind of their methodology of working. uh, हम्म। and in Europe also you will see people, they will take 1 year but they will do such an outstanding work, उस पेपर को लाइक एक महीने में 200 साइटेशन मिल जाएंगे। दिस, आई मीन, ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क जो होता है यूरोप में, दे टेक टाइम। आई हैव सीन प्रोफेसर, लाइक इवन मैं अभी कुछ प्रोफाइल जस्ट देख रहा था कुछ प्रोफेसर्स के, like they are very young but they have like 10,000 plus citations so early in their career. उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे साइटेशन, मतलब व्यूअर्स के लिए, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल या टर्म हम यूज कर रहे हैं। या तो साइटेशन जो होता है मतलब उसमें क्या, आपको सपोज अभी आपका पेपर पब्लिश किया जर्नल पे, राइट, या ऑफिशियल, तो उसमें साइटेशन मिल रहा है, तो उसमें आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है? सो बेसिकली साइटेशंस दिखाता है कि कितने लोगों ने आपके काम को यूज किया है, लाइक योर पेपर हाउ इट हेल्प अदर्स रिसर्च। तो हम्म। वो लोग जब साइटेशन देते हैं तो क्या होता है, जितना आपका यू नो लाइक साइटेशन से मिलता है तो आपका स्टेटस एज अ रिसर्चर वो बढ़ता रहता है। पीपल, ज्यादा लोग आपको पहचानते हैं, पीपल वांट टू कोलैबोरेट विद यू, इंस्टीट्यूट आपको बुलाएंगे फॉर टॉक्स, फॉर इवन कोलैबोरेशंस, फॉर एनी काइंड ऑफ विजिटिंग पोजीशंस लाइक दैट। तो जैसे लाइक अभी ये मान लीजिए आपका दो पेपर है, आपको एक में 2 साइटेशन मिले हैं और एक में और 2 साइटेशन मिले हैं, तो आपका एक एच इंडेक्स होता है। तो एच इंडेक्स जो होता है दैट काइंड ऑफ गिव्स यू एन आइडिया कि आपका जो काम है वो कितना हद तक, लाइक यू नो योर पेपर्स हाउ पॉपुलर दे आर एंड हाउ इम्पैक्टफुल दे आर इन योर कम्युनिटी, इन योर लाइक इन योर डोमेन, वो आपके आपका जो रिसर्च वर्क है वो कितना इम्पैक्टफुल है। तो आप अगर लाइक हम किसी यूरोप के, जर्मनी, स्पेशली जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड टू सम एक्सटेंट पोलैंड ऑल्सो, आप इन कंट्रीज के उठाओगे, यू विल सी प्रोफेसर हुज दिस नंबर, दिस एच इंडेक्स इज लाइक 30,000 और समथिंग, 15,000 लाइक दैट। सो फिफ्टीन दैट थाउजेंड कैन, अटेंडेंस मतलब उसमें क्या मतलब 15,000 साइटेशन ना इसके ना, उसके तो रैंक एक है? मतलब नहीं, रैंक नहीं, तो लाइक मान लीजिए दो पेपर है आपका, एक में मिला है आपको 10,000 साइटेशन और एक में आपको मिला है 9,000 साइटेशन, तो आपको एच इंडेक्स जो होगा दैट विल बी 9,000, काइंड ऑफ द मिनिमम ऑफ द, लाइक यू नो, एटलीस्ट इट्स काइंड ऑफ एवरेज या? या। तो जिनका 15,000 साइटेशन है, दैट यू कैन इमेजिन दैट एच इंडेक्स उनका जो है, एक पेपर में उनको इतने साइटेशन मिले हैं। ओके, और एक चीज, जो साइटेशन मिलता है जो लोग यूज करते हैं उनका पेपर पब्लिश होने के बाद वो लिंक होता है, राइट? साइटेशन आपको हाँ हाँ, कैलकुलेट कैसे लाइक होगा? लाइक एक्चुअली बात क्या है कि आपका एक आर्काइव होता है, आर्काइव हम्म। होता है जहाँ पे आप मान लीजिए आपका पेपर आप पूरा ड्राफ्ट बना चुके हो, एंड यू गेट अ मैसेज फ्रॉम द जर्नल दैट ये पब्लिश हो जाएगा नेक्स्ट 1-2 महीने में।
तो तब आप क्या कर सकते हो, आपका जो आर्काइव है वो इट्स काइंड ऑफ लाइक लाइक जैसे अपना प्रोग्रामिंग में गिटहब है, जहाँ पे आप अपना जो कोड वगैरह है, कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट किए हो उसको आप डालते हो, लाइक यू शेयर विद द कम्युनिटी। आर्काइव इज काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म, लाइक आप अपना जो काम है, इट्स कॉल्ड अ प्री प्रिंट। तो जो आपका पब्लिश्ड आर्टिकल होता है वो होता है कि वो पूरा जर्नल ने पब्लिश करके पब्लिक को दिखाया, और एक होता है प्री प्रिंट, दैट इज जस्ट बिफोर पब्लिकेशन। प्रीव्यू कह सकते हैं। हाँ, प्रीव्यू प्रीव्यू टाइप का, लाइक नो यू जस्ट गेट अ ग्लिम्स ऑफ क्या हो रहा है। तो प्री प्रिंट आप अपना आर्काइव पे डाल सकते हो, एंड दे अनाउंस इट कि ये नया पेपर आया है, दीज आर दी हम्म, ऑथर्स। तो उससे लोगों को पता चल जाता है कि एक नया पेपर आया है, अभी नया काम एक हुआ है, लेट्स एक्सप्लोर क्या हुआ है इस काम में। तो इफ हम्म। दैट इज वेरी गुड, देन यू विल गेट, पीपल विल स्टार्ट साइटिंग इट स्ट्रेट अवे। You citing it means start taking it as a reference, right? यस, रेफरेंस, या आपके जो पेपर, So कोई नया पेपर होगा तो उसमें रेफरेंस सेक्शन में आपके पेपर का होगा लाइक लिंक। जैसे मैं मेरा वही क्वेश्चन है, पर अभी जैसे अभी आप एक पेपर पब्लिश किए, ओके, जी तो जी। उसके बाद सपोज मैं आपको रेफरेंस लूंगा, तो मैं जब पेपर पब्लिश करूंगा देन जा करके लोग पता चलेगा कि मैं आपको मतलब आपका रेफरेंस लिया, सपोज मैंने पब्लिश नहीं किया, हाँ, तो फिर आपको पता नहीं एक, लाइक आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, लाइक लेट्स से आपका गूगल स्कॉलर प्रोफाइल है, या जो हम्म जहाँ जो जैसे कोई भी इंस्पायर एचईपी एक है, रिसर्च गेट है, तो इन सब में आप अगर अपना प्रोफाइल बनाओगे, आप अपने पेपर्स डालोगे, तो अगर किसी ने साइटेशन दिया, तो हम्म। आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यू हैव अ न्यू साइटेशन। मतलब ये ऑटो लिंक है। हाँ 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 जी। ओके। जैसे जो पेपर जो पब्लिश होता है, ओके, लेट जी। सपोज इफ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क इन द साइंस सेक्टर, टेक और या एनीथिंग, या पेपर पब्लिश होने से पहले उनका तो कुछ मेथड्स होगा वेरीफाई करने के लिए इट इज हाँ, जेन्युइन वर्क तो और। लेट्स से पहले आप जब पेपर पहली बार सबमिट करते हो, तो वो पहले प्लेगरिज्म चेक करते हैं। हाँ। Plagiarism, like आपने कितना, like like when you're writing a paper, you should write in your own words rather than copy यस pasting यस। from somewhere. आप रेफरेंस दो कि आपने यहाँ से ये वाला पार्ट उठाया है, ये वाला आइडिया आपका जो है ये इस पेपर से आया, रेफर इट, बट पैराफ्रेज इट, लाइक राइट इन योर हम्म ओन वर्ड्स। ये चीज पहले चेक होगा, ये स्टार्टिंग प्रिलिमिनरी राउंड है, यहाँ पे प्लेगरिज्म चेक होगा। उसके बाद जाके रिव्यूअर के पास वो जाएगा। रिव्यूअर फिर लाइक एक महीने 1.5 महीने बाद आपको रिवर्ट, लाइक जर्नल के थ्रू आएगा आपको एक मेल कि रिव्यूअर ने ये कमेंट्स दिए हैं। और आपको पता नहीं चलेगा कि रिव्यूअर कौन है, वो एनोनिमस है। ओके तो वो चीज आपको कभी पता नहीं चलेगा, लाइक इवन आफ्टर योर पेपर्स पब्लिश आपको पता नहीं चलेगा वो चीज। ओके। तो यू हैव टू काइंड ऑफ लाइक एड्रेस दोस क्वेश्चंस एंड रीसबमिट। हम्म। रीसबमिट होने के बाद फिर से प्लेगरिज्म चेक होगा, फिर आपका रिव्यूअर देखेगा। इफ ही और शी इज हैप्पी, वो बोल देंगे कि इट इज नाउ रेडी टू बी पब्लिश्ड। अगर या नहीं है तो अगर नहीं है तो फिर और एक राउंड का रिव्यू होगा। बट लाइक 3-4, अगर 4 बार रिव्यू हो रहा है, देन पेपर को यू शुड आइदर रिट्रेस इट, और पेपर इज रिजेक्टेड, कि इस जर्नल में ये पेपर पब्लिश नहीं हो सकता। तो उसका मतलब है यू हैव टू काइंड ऑफ नाउ ट्राई फॉर एनी अनदर जर्नल, वहां पे आपको ओके। सबमिट करना है। और ये है कि एक साथ आप 2 जर्नल में सबमिट नहीं कर सकते। ये एक रहता है लाइक डिस्क्लेमर टाइप का। तो हाँ, तो यही व्हाट है। आर द मोस्ट डिमांड जर्नल? जैसे मेरे अभी एस्ट्रोफिजिक्स में आपका नेचर है, देन यू हैव एस्ट्रोफिजिकल जर्नल, जो कि अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी का है। एंड देन यू हैव मंथली नोटिसेस ऑफ रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी मनरास, जो कि है आपका ऑक्सफोर्ड प्रेस का। तो यूके का वो है। एंड देन दिस इज एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स A&A। दीज आर, आई मीन उसका पता नहीं मुझे इस पे वो किसके अंडर आता है, बट या यही 3 टॉप है, नेचर, एपीजे और मनरास। ओके। देन सपोज लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग। जैसे आप एमआईटी में जो आपका रिसर्च चला था उसमें आपका बहुत सारे कॉलिग्स भी होंगे ना, आप अकेले कर रहे थे, आपका आपका सो कॉलिग्स भी होंगे? हाँ, सो दिस अ गुड क्वेश्चन। सो बेसिकली प्रोफेसर जो होते हैं यूएस में, तो बात क्या है कि मैंने पहले मेल किया था एक प्रोफेसर को, प्रोफेसर मार्क वोगल्सबर्गर, जो अभी वहां पे हैं, हु वर्क्स ऑन दिस गैलेक्सी एवोल्यूशन। तो उनको मैंने मेल करके, एक पोस्ट डॉक थे उनके ग्रुप में, हु विथ हुम, जिनका पेपर मैंने पढ़ा था, लाइक क्या होता है कि पोस्ट डॉक वाज द फर्स्ट ऑथर एंड प्रोफेसर मार्क वाज द सेकंड ऑथर इन द पेपर।
तो फर्स्ट ऑथर को आपको कांटेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसको ही सबसे ज्यादा अच्छा आइडिया होता है कि काम क्या हुआ है। तो उनको मैंने कांटेक्ट किया सीसी में रख के। तो देन ही वाज लाइक उन्होंने मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू लिया, जस्ट टू नो कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। और इससे पहले भी लाइक डॉक्टर फेलिक्स गोटी थे, हु वाज अ पोस्ट डॉक एट एमआईटी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। तो लिटरली आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने उनको रिमाइंडर भेज भेज के उनका दिमाग खराब कर दिया था। हम्म मुझे बस काम करने का एक मौका दीजिए। हम्म So ultimately, what he did was he told me, read this paper and I will give you a problem to solve. Depending on that, we will see what we can do. तो ठीक, तो कॉन्वेक्स ज्योमेट्री, तो उस पे लाइक मुझे कोई आइडिया नहीं था लाइक क्या है, पर मैंने पेपर पढ़ा, वो बुक टाइप का था, लाइक 100 पन्ने का था। तो आई स्टार्टेड रीडिंग इट एंड देन ही वाज लाइक he gave me the problem. I was like, after 2 months I told him that I have finished reading the book, now you can give me the problem. तो प्रॉब्लम जो था उन्होंने मुझे दिया, मैंने उसका एक 4 पन्ने का सोल्यूशन लिख के उनको भेजा। दैट वाज नॉट द एग्जैक्ट आंसर, बट ही लाइक्ड माय अप्रोच जो मैंने हम्म यूज किया था। बीइंग अ हम्म सेकेंड ईयर अंडर ग्रेजुएट, लाइक इन थर्ड सेमेस्टर, ही लाइक्ड द हम्म अप्रोच। तो उन्होंने मुझे फिर बोला कि तुम तो लगते नहीं हो कि तुम्हारा मैथ्स में उतना कुछ है, मतलब लाइक तुम्हारा कोई आइडिया तो अभी होगा नहीं कि क्या करना है आगे जाके, कौन सा फील्ड चूज करना है एंड ऑल दैट। तो मुझे बताओ, लाइक बताओ एज अ किड व्हाट यू वांट टू एक्सप्लोर। तो उसके बाद मैंने बोला कि सर मेरा ऐसे एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट है एंड एस्ट्रोकेमिस्ट्री, तो ये बस वही है अभी के लिए, मैं वही पढ़ रहा हूँ, पेपर वगैरह ऐसे कहीं से भी उठा के मैं पढ़ता रहता हूँ। ही वॉज लाइक कि ओके। तो उन्होंने मुझे फिर कांटेक्ट में डाला प्रोफेसर मार्क एंड अदर प्रोफेसर ऑल्सो। तो एमआईटी का ऐसे सेमिनार्स वगैरह होता रहता है, तो जहाँ पे वो जो उनके बच्चे हैं, अगर प्रोफ किसी बच्चे को जानता है, सो दे टेल की दिस इज अ जूम लिंक, आ जाओ अटेंड करो। उसके हम्म बाद यू अटेंडेड एंड इफ यू गेट सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस यू आस्क द प्रोफेसर्स, तो वो खुश होते हैं, लाइक दे रियली लाइक इट। प्रोफेसर मार्क से भी मैंने ऐसे ही बात किया एंड देन ही वाज लाइक टॉक विद माय पोस्ट डॉक एंड देन लेट्स सी इफ वी कैन डू समथिंग। तो उस इंटरव्यू एक हुआ मेरा। तो वो जो मैथ्स का प्रॉब्लम जो उन्होंने मुझे दिया था सॉल्व करने के लिए, तो उन्होंने थोड़ा देखा क्या क्या है, बिकॉज आई मीन बोथ ऑफ देम हैड अ वेरी गुड, आई मीन एस्ट्रोफिजिक्स दे हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन मैथमेटिक्स, theoretical astrophysics they have it. तो दे वर लाइक ओके दिस इज नाइस। तो उन्होंने फिर मुझे पूछा कि एस्ट्रोनॉमी के बारे में क्या जानते हो, व्हाट यू नो। तो मैंने ऐसा अनाप सा कुछ, जो भी मैंने अभी तक पेपर्स वगैरह में पढ़ा था, उनका भी जो पेपर था मैंने पढ़ा था, आई काइंड ऑफ जस्ट काइंड ऑफ समराइज इट कि ये मुझे समझ में आया एंड दिस इज व्हाट आई थिंक सम ओपन प्रॉब्लम्स, लाइक जस्ट इन अ नाइव वे। ऐसा नहीं कि कोई हाई फाई चीज बोल दिया था, बस जस्ट इन नाइव वे। तो देन ही वाज लाइक ओके देन मे बी वी कैन स्टार्ट गेटिंग सम आइडिया। तो उन्होंने मुझे उसके बाद अब बोला कि ठीक है, आई विल ट्रेन यू, आई विल गाइड यू, तो बट यू शुड बी मोटिवेटेड एनफ टू वर्क विथ मी। बोले कि मैं खुद वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, मेरा घर न्यूयॉर्क में है और मैं एमआईटी है कैम्ब्रिज में, बोस्टन में, तो आई एम नॉट एबल टू गो एवरी डे देयर। तो तुम्हारा कोई ऐसा मन होगा एमआईटी आने का एंड ऑल दैट। तो मैंने हाँ बोल दिया सीधा कि हाँ सर एमआईटी आना है। एंड ही वाज लाइक दिस इज दी एमआईटी आके क्या करोगे, एमआईटी अगर मान लो आगे 3 महीने के लिए क्या करोगे। तो ही वाज लाइक यू विल फर्स्ट यू विल ट्राई टू रोम अराउंड द सिटी एंड ऑल अमेरिका, यू फॉर योर अमेरिकन ड्रीम एंड ऑल। तो आई वाज वेरी ऑनेस्ट, बोला सर ऑनेस्टली यस। ही वाज लाइक नो, यू आर इन नाउ सेकेंड ईयर, you have to get rid of this childish kind of behavior. This I mean the fact is why US is so advanced and all, मुझे उस like तभी पता चला कि why US is kind of so advanced and इतने नोबेल लॉरेट्स निकलते हैं। It's not Why? about it's not about having बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, but it's about the mentality you possess, like how you organize yourself, आप कैसे काम करते हो। ये बचकानी हरकतें जो है ये छोड़नी पड़ेंगी आपको, और आप इन्हें जितनी जल्दी छोड़ोगे दैट्स गुड। आपको घूमना है आप घूमोगे, लेकिन मैं अभी 14 दिन के लिए इजिप्ट गया था, मैं देखा वो चीज जो मुझे 1.5 साल पहले बोले थे, एक्चुअली आई नाउ रियलाइज इट कि हाँ सही है, like Can you explain? Can you go a little bit deep? यस। Yeah. तो इजिप्ट में 14 दिन के लिए गया, आई जस्ट गॉट वन फ्राइडे टू सी द पिरामिड्स एंड बात ये है कि मैंने देखा, मेरा आई मीन आई वाज हैप्पी विद इट व्हेन नाउ माय 14 डेज वर ओवर। मैं अपना टॉक दिया एंड लोग इतना खुश हुए, बच्चे जो थे वहां पे इजिप्ट के बच्चे थे, वन देयर वर टू अदर गाइस फ्रॉम जॉन हॉपकिंस एंड इंपीरियल कॉलेज इन लंदन, तो दे वर आल्सो वेरी हैप्पी। दैट वाज द मेन सेटिस्फैक्शन दैट आई वांटेड। तो मैंने जब बाद में आके अपने आप से पूछा
कि क्या घूमने से तुम्हें पिरामिड्स देखने से ज्यादा मजा मिला या फिर तुमको टॉक देख के इम्प्रेसिंग दोस पीपल ज्यादा अच्छा लगा तुमको? आई वाज लाइक नो, मेरा काम अच्छे से गया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। तो पिरामिड्स में बाकी कब भी देख सकता हूँ, तो वो चीज, यही जो थिंकिंग है, ये जो थॉट प्रोसेस है, ये मेरा सेकेंड ईयर में नहीं था। सेकेंड ईयर में मतलब मैंने सपोज अब जैसे अभी आप डॉट कनेक्ट कर रहे हो सेकेंड, जैसे आपको प्रोफेसर ने बोला था कि लाइक ये या चाइल्ड इज, दैट मींस यू आर या सेइंग इफ यू आर गोइंग टू एमआईटी, या सपोज आप प्लान कर रहे हो, देन जस्ट डोंट थिंक यू आर गोइंग टू एमआईटी टू लाइक कूल बनना है, जैसे मेरा हाँ एक हमेशा एग्जैक्टली। है कूल बनना है, इट्स काइंड पार्टी ऑफ करना लाइक है। मैं एमआईटी में पहुंच गया। इट्स नॉट लाइक कि द जर्नी इज ओवर। आई मीन देयर आर बिगर थिंग्स ऑल्सो। वो चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ती है, वो चीज इंसान भूल जाता है जब वो एक चीज अचीव कर लेता है। ही रीचेस अ सर्टेन पॉइंट ही हैड ड्रीम्ड ऑफ एंड ही इज नाउ देयर, तो उसके बाद वो चीज भूल जाता है। यू हैव टू, इसी पॉइंट पे आपकी मैच्योरिटी टेस्ट होती है, आप कितने खुद को कंट्रोल करके रख सकते हो। बिकॉज देयर आर अदर थिंग्स टू अचीव ऑल्सो, देयर बिगर थिंग्स। आपको अपने गोल्स को हमेशा बढ़ाना पड़ेगा। यू हैव टू सेट न्यू बार्स एवरी डे फॉर योरसेल्फ। तभी जाके लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, पीपल विल अप्रिशिएट यू। सो ये चीज, वही चीज मुझे उन्होंने सेकेंड डे में बोली थी, मैंने हाँ पे हाँ मिला दिया था। बट आई गॉट अ फील नाउ, लाइक मैंने ट्रेवल्ड एंड आई वॉज लाइक, अभी कल ही मेरा जूम मीटिंग था, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। तो ओके अपना काम का डिस्कशन वगैरह हुआ, वी आर टॉकिंग कि सर व्हाट यू टोल्ड मी, नाउ आई एम रियलाइजिंग इट। So he was like, now you have grown up. Now you are ready ओके for that. ओके। You are ready for that PhD phase where like you will go to conferences, you will go to places you for your work. You should go for your work first. घूमना is just kind of a bonus. मिलता है तो अच्छा है, नहीं मिलता है तो ठीक है। ऐसा हो सकता है कि सपोज आप इजिप्ट गए लेकिन हाँ पिरामिड भी नहीं घूमे, लेकिन आप काम खत्म हाँ, करके आए, काम लाइक काम दैट। खत्म करे और अच्छे से काम खत्म करके पीपल आर इम्प्रेस्ड विद योर वर्क। वो इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गेट। इजिप्ट तुमको पैसा मिलेगा, यू विल बी अर्निंग समडे, यू कैन गो ऑन योर ओन। बाय वैकेशन यू कैन से, या। हाँ एग्जैक्टली। तो दिस इज लाइक, वो मुझे ये चीज बोले कि स्टूडेंट्स यही चीज को समझ नहीं पाते हैं। तो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, यू वांट टू रीच दैट काइंड ऑफ अ लेवल, तो आपको ये चीजें अपने अंदर जल्दी जल्दी लानी पड़ेंगी। या आप जितना भी विथ योर इन योर पर्सनल लाइफ यू आर डिफरेंट थिंग, इन योर प्रोफेशनल लाइफ यू शुड बी अ प्रोफेशनल। दोस्तों के साथ मस्ती एंड ऑल दैट, दैट्स फाइन, दैट्स ओके, बट व्हेन यू आर इन अ प्रोफेशनल प्लेस, यू आर गोइंग फॉर वर्क, यू शुड ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, ओके बिकॉज पीपल विल जज यू देयर। तो वहां श्योर। पे ये मत एंड ऑल्सो यू आर रिप्रेजेंटिंग। या यू आर, आई मीन यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, काइंड ऑफ। या आई मीन उतना कुछ कंट्री के रेस्पेक्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, बट फॉर यू पर्सनली इट विल हर्ट यू इफ यू डोंट वर्क वेल। और अगर अंडरस्टूड। वो चीज हर्ट नहीं करता है, देन यू आर लाइक मैं बस मजे के लिए गया था, तो यस इससे लाइक। यू कांट अचीव एनीथिंग। सो या ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट अगेन। जैसे कि मेरा या क्वेश्चन था कि आपके जो मतलब रिसर्च था उसमें कोई आपका कॉलिग्स थे या कॉलिग्स नहीं थे? यू आर डूइंग द रिसर्च मींस सिंगल? तो कलीग्स लाइक, आई मीन यू मीन फ्रेंड्स, लाइक दोस्त मेरे? नो फ्रेंड्स इन द सेंस, मतलब वो रिसर्च में और कोई मतलब ग्रुप रिसर्च था या सिंगल सिंगल, मतलब आप खुद नहीं ही नहीं, पेपर एक्चुअली कर रहे वो मेरा अभी भी लाइक, वी हैव अ ग्रुप मीटिंग जहाँ पे और भी ग्रुप के मेंबर्स हैं, बट वो अपना सेपरेटली काम कर रहे हैं। थे? बट इफ आपके यू काम वांट, आपका सिंगल हाँ, तो सिंगल मेरा एफर्ट है, मेरा राइट? मेरे में सुपरवाइजर है और मैं हूँ। बट इन केस आई वांट सम काइंड ऑफ अ हेल्प, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, आई कैन आस्क एनी अदर ग्रुप मेंबर इफ ही और शी इज काइंड ऑफ टैकलिंग अ सिमिलर काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। ओके, एंड इसमें ये और एक क्वेश्चन मुझे आ रहा है, जैसे कि या एग्जांपल, अभी यू आर डूइंग वर्क विथ मींस अमेरिकन पीपल, लाइक विथ या अमेरिकन सोसाइटी, एंड या यू आर स्टडीइंग इन इंडिया, राइट? या तो हाउ यू सी द थॉट प्रोसेस डिफरेंस, क्या डिफरेंस है? I mean, like the thing I said, getting the job done and staying focused. If you compare, like, let's say I'm an undergraduate, so it's better I compare myself with an undergraduate student of the US. Yes, you, yeah. Yeah. So what I see the difference is in them is that you might not be very talented, but being consistent, being able to dedicate your working hours, like students they have working hours. इससे इस टाइम पे मैं काम करूंगा, मैं और कुछ नहीं करूंगा, बीच में शायद लंच या ब्रेकफास्ट जो भी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल जस्ट वर्क। फन टाइम एक अलग है। तो ये चीजें मैंने सीखी वहां पे जाके, लाइक ये चीजें मुझ में मिसिंग थी। मैं जब काम पे हूँ, आई शुड वर्क, कोई गाना लगा दिया, काम किया। आई हैव टू फाइंड माई ओन वेज ऑफ चियरिंग माई सेल्फ, माई ओन सेल्फ। आई शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी वन एल्स। ये चीजें, ये डिफरेंसेस मैंने देखी। Even in the first year undergraduate, you see there
दे आर वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट दे आर डूइंग। आपका क्या है कि इंडिया में दिक्कत क्या होता है कि सब इंजीनियरिंग डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम्म तो वो एक इट्स काइंड ऑफ सोसाइटी लाइक क्या हो रहा है क्या नहीं, तो हम्म वो चीज वहां पे नहीं है। a lot of thing has to go, how the society is behaving, how how you have grown up, आपकी upbringing mentality कैसी है, वो चीज बहुत मैटर करती है। वहां पे पीपल, वो लोग आते हैं कॉलेज में, दे आर सो पैशनेट अबाउट व्हाट दे वांट टू डू, सो क्लियर कट आइडिया दैट आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट, बट आई हैव दिस इन माइंड ऑल्सो। इतना क्लैरिटी ऑफ थॉट होना, आई मीन आई वाज रियली इम्प्रेस्ड, दिस इज व्हाट आई शुड ऑल्सो ट्राई टू add in my own self. You will have failures, you won't be successful, but you have to be consistent with what you are doing. तो ये एक्चुअली यही अंडरग्रेड में डिफरेंस देखा एक्चुअली। एंड प्रोफेसर्स भी बहुत मोटिवेट करते हैं, पुश करते हैं बच्चों को वहां पे, एंड इन अ वेरी पोलाइट मैनर, दे आर वेरी ऑनेस्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दे आर वेरी ऑनेस्ट। बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू मिलता है, जो कि इंडिया में मुझे नहीं लगता उतना है। इवन यूरोप में भी ऑल्सो आप देखो यही चीज है। दैट्स व्हाई यू सी पीपल आर सो सक्सेसफुल देयर, पीपल आर डूइंग दैट काइंड ऑफ हाई इम्पैक्टफुल रिसर्च। ऐसा नहीं कि इंडिया में रिसर्च नहीं होता एंड ऑल दैट, बट इंडिया में उस तरह का लेवल क्रिएट करने में, इवन अंडर ग्रेजुएट्स में वो चीज क्रिएट करने में ना, मुझे लगता है और टाइम लेगा। आई मीन होता है, इट्स काइंड ऑफ मोर अबाउट हाउ यू कम इनटू कॉलेज, आप किस मेंटालिटी के साथ, किस मूड के साथ कॉलेज में अच्छा, घुस रहे हो। अब जैसे आपके जो क्लासमेट अभी है, ओके, हाँ हाँ यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, सो आपके हाँ। क्लासमेट्स से वो लोग भी इस तरह से एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं, या यू आर डूइंग अलोन दिस थिंग्स, नो नो, आई दिस मीन काइंड ऑफ मेरा माइंडसेट? मेरा एक दोस्त है अमित शुक्ला, लाइक आई नेवर सी अ डिफरेंस इन मी एंड हिम। वो एक्चुअली वो एस्ट्रोनॉमी में नहीं, वो एक प्रोग्रामर है, बट ही इज सो फोकस्ड एंड ही लव्स व्हाट ही इज डूइंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वॉट एवर यू आर डूइंग, यू शुड लव इट। आपका जो प्रोफेशन है, इफ आर नॉट लाइक, आपको इंजीनियर बनना था, आप अभी डॉक्टर बने हो, यू आर नॉट गोइंग टू एंजॉय इट। आपके लिए हर दिन इट विल बी लाइक, मैं बस गैस चैम्बर में जा रहा हूँ, फिर निकल के आ रहा हूँ वापस। तो वो चीज मैं उसमें नहीं देखता। आई मीन देयर अदर स्टूडेंट्स आल्सो फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स, लाइक आपको हर एक डिपार्टमेंट में यहाँ पे एक दो बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो दो आर वेरी फोकस्ड एंड दे आर वर्किंग लाइक दैट, बहुत मेहनत कर रहे हैं वो लोग। तो लोग ऐसे हैं, लाइक आपको आइजर में यू एक्सपेक्ट कि पीपल थोड़े अच्छे, द गुड स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया दे कम हियर, आईआईएससी बैंगलोर हो गया या आईआईटी हो गया, यू एक्सपेक्ट कि बच्चे निकलेंगे यहाँ से ऐसे, जिनका मेंटालिटी ऐसा होगा। बट इफ यू वांट टू काइंड ऑफ पुट इन अ लार्जर पर्सपेक्टिव कि और भी बच्चे ऐसे आए, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। यूएस में ओके, आप सो ये चीज नहीं, यूएस में लाइक पेरेंट्स उतना इतना प्रेशर नहीं डालते कि है तुझे ये करना है एंड ऑल, गो व्हाट इंटरेस्ट यू हैड, डिड यू अचीव व्हाट यू वांटेड, दैट्स द क्वेश्चन। इफ द आंसर इज यस, गो फॉरवर्ड, इफ नो, टेक अ सीट बैक एंड सी व्हाट मिस्टेक्स यू डिड, एंड देन ओके, काइंड ऑफ ट्राई टू रेक्टिफाई इट। लेट मी, हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 23। सो मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि 23 इयर्स में इतना क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है। So I am so happy to talking to you, and that's why I am doing this kind of podcast, या because या podcast में मुझे एक मजा आता है कि जैसे अभी जैसा मेरा थॉट्स है, राइट, वो हाँ मेरा या थॉट है, लेकिन when I am doing the podcast I want to take a deep dive into your mind, right? यस यस What यस is यस running behind your mind, what is running यस inside your mind, या how you can approach, how what you think, उसमें या मुझे थोड़ा थॉट का मुझे लगता है कि इसके थ्रू मेरा थॉट कोलाब हो रहा है, कॉम्पिट हाँ नहीं होता है, पॉडकास्ट या में कंपटीशन नहीं होता है, या मतलब वो मेरा पर्सपेक्टिव है। या That's why I'm doing it, because I am not doing it to getting money. Simple thing या is not there. I am हम्म doing it for my own हम्म and for the viewers. या यस मैं इतना कोई बड़ा महान आदमी नहीं हूँ कि मैं सब कुछ व्यूअर्स के लिए कर रहा हूँ। That's हाँ not like that. मुझे हाँ मुझे खुद भी एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे हाँ जी जी मेरा एक दोस्त ने मुझे बोला था, तो उसमें मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे कि हाँ सपोज यहाँ पे एक पार्टी हो रहा है, ओके, हाँ यहाँ पे जाके मुझे थोड़ा दो बियर या हाँ दो हाँ टकीला लगा करके बैठना है, हाँ या हाँ, मुझे एक गेस्ट से बात करना है। जी 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 मुझे अच्छा लगता है कि मेरे गेस्ट से मैं बात करूंगा, जी जी देन आई विल गेट सम काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। पार्टी में भी मिलता हाँ है, दे आर डिफरेंट थिंग, जी तो जी मुझे वो अच्छा लगता है। या तो ये मेरा थॉट्स है। सो जी लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। या जैसे कि whatever you are doing good, okay, means I can say हाँ there are lots of things you are planning in your mind, right? या हाँ हाँ But have you ever decided, like, what are your long term goals
and how is your current study path aligned with them? Have you ever think these things? नहीं, इसके बारे में मैं सोचता हूँ, like I think a lot, because see, for me, like now, the gut feeling I have is after my undergraduate I should do a PhD. This is kind of my gut Okay, feeling, like go for it. okay, Because मैंने like my 4 years I've devoted to just reach this stage so that I can be good enough to do a PhD in US under some professor in a top university. So that's why I have kind of, this contacting these so many professors, working under them. I wanted to feel that rigor. Academia का जो toughness होता है, जो pressure होता है, मैं at a young age I should be able to handle it. मैं सीखूं चीजों को, like it's one thing is research and one thing is about how you are approaching the problem. तो वो जो approaching the problem वाला part है, that is very important. और वो चीज आपको experience के साथ ही आती है. वो चीज आप एक दिन में नहीं सीख सकते, एक प्रोजेक्ट से नहीं सीख सकते आप, या फिर एक बार 3 महीने के लिए बाहर चले गए आप नहीं सीख सकते. यू हैव टू सिट, वर्क एंड शो द रिजल्ट्स टू द पीपल. एंड मैंने ये अपना जो भी 4 साल है मैंने इसी पे फोकस करा है. एंड ऑब्वियसली ना अभी एप्लीकेशन वगैरह आएंगे अभी. आई डोंट नो होगा कि नहीं होगा, बट या बट लाइक let's try. या एग्जैक्टली, आई मीन लेट्स ट्राई, गिव इट माई बेस्ट शॉट. बिकॉज मैंने अपना 4 साल वेस्ट नहीं किया है. Yeah, yeah. I didn't do any kind of rubbish things in my 4 years at college. 2 साल तो कोविड में चला गया, बाकी के 2 साल जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. उसमें भी अभी जैसे भी मैं मुझे रूम एक मतलब अच्छा एक कोट याद आ रहा है, राइट? बिफोर पे. कटिंग टू ट्री ट्राई टू सेव योर एक्स, ओके, right? या Yeah, एग्जैक्टली, yeah, no, that is what you are doing, right? या So you are means nurturing yourself या to means when you will be go there, like you will kill it, यस, आई मीन like this kind of things. इट्स ऑल अबाउट लाइक मेरा एक सपना था, लाइक आई हैड अ ड्रीम, एंड हाउ आई कैन अचीव इट. आपके ड्रीम्स जो है, आपके डिजायर्स जो हैं वो बढ़ते रहेंगे एज यू मूव फॉरवर्ड. बट आपने कुछ एक चीज से स्टार्ट किया था, एक स्टार्टिंग पॉइंट था. जब आपका, मैं यही चीज करता हूँ, व्हेन यू आर डाउन, व्हेन यू आर नॉट फीलिंग गुड, आपको यही चीज आपसे पूछनी चाहिए कि मैंने ये चीज स्टार्ट क्यों की थी. ये जब तक ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में नहीं आएंगे ना, तो नहीं होगा. आई मीन फॉर मी मेंटालिटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन दैट यू कैन यूज टू कॉन्कर एनीथिंग. लिटरली मेंटालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. पढ़ाई लिखाई मेहनत ये सब यही से ही आती है. तो यहाँ पे जब तक नहीं आएगा तो वो, आई मीन इट वोंट बी रिफ्लेक्टेड इन योर वॉट एवर आउटपुट यू आर गिविंग. तो एकेडेमिया Okay, में या कोई भी डोमेन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. okay. So then next things. Okay, ये हो गया आपका नेक्स्ट कोड पीएचडी है, लेकिन और एक भी थोड़ा उसको थोड़ा और एक लेयर पे जाने के लिए, Yeah. how do you see the future of the data driven astronomy evolving in the next decade? या सो देखिए, एक चीज तो है कि एमएल को लोग बहुत अभी सीख रहे हैं. मशीन लर्निंग 2016 से जब वो इंट्रोड्यूस हुआ है, एंड लोग लाइक बस हो गया है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है. कोई भी फील्ड में हो वो घुसता ही जा रहा है. वो इट्स काइंड ऑफ गोइंग ऑन पेनिट्रेटिंग. लाइक कोरोना तो चला गया पर एमएल नहीं जाएगा. एंड एस्ट्रोनॉमी में भी अगर आप देखोगे, पीपल आर नाउ सीइंग कि रिजल्ट्स जो हैं वो ट्रेडिशनल स्टैटिस्टिकल मेथड से बेटर आ रहे हैं इफ आई एम यूजिंग एन एमएल मॉडल. बट एमएल मॉडल चलाने के लिए वैसा एक बंदा चाहिए जो वो चीज कर सके. someone who can implement that thing and give you the results, and those people are kind of rare. So for that, people need who have a strong background in data science, or let's say programming, let's say computer science. They want those kind of people who can there are certain thoughts, you have certain thoughts, and you want you to it come into a reality. Your visualization that should come into reality, so that you can show it to people. So for these things you need people who are in data science background or CS background, those who can do that. Like मेरा जो दोस्त है अमित, he is a top notch programmer. Like so you need these kind of people who can do that kind of thing for you. So yeah. Okay. So next thing is like, I have prepared so many questions, so I'm looking to what I need to ask you. Okay. Okay. I mean, yeah, I मुझे can बताइए give कि like more 10 minutes or so.
Yeah, So yes, yes. So yeah, yeah, we'll wrap it up. Yeah. yeah, Balancing intense studies with personal life can, okay, balancing intense study and the personal life yeah, can be challenging, right? yes, So yes. how do you maintain this balance? Like honestly, I don't know the difference between personal and professional life. Like मेरी कोई personal life नाम की कोई चीज है नहीं. Like it's Now you're a like my student, that's why, yeah. yeah. I mean for me, for personal life, क्या like what it can be like my family, my friends. That's it. Do you have any girlfriend? No, Okay, means no, you're I single. don't have. Yeah. Okay, okay, okay. So the fact is कि and for me, my professional life has been the most important thing after I came into college, and that's why people look up to me. That's why I have like like शाश्वत भैया है and शाश्वत भैया से पूछ सकते हैं. So I kind of think like when my work can influence people in this way, these having this kind of like girlfriends and all. So why should I have like गर्लफ्रेंड का जो दिक्कत है वो हुआ था मेरे साथ लास्ट सेमेस्टर में. तो बट मैं जल्दी मूव ऑन कर गया उस चीज से. मेरे लिए कभी भी कोई डिस्टरबेंस नाम की चीज आती है, मेरा काम आके मुझे बचा लेता है. इट हैज दिस इज द लाइक यू वेदर इट्स लाइक लाइक मैं किसी पार्टी में हूँ, किसी शादी में गया हूँ, मुझे ख्याल नहीं है टाइम कितना हो रहा है, मेरा एक मीटिंग है, समहाउ द अदर वो खटाक से मेरे दिमाग में आता है, मैं दौड़ के निकलता हूँ वहां से. एंड आफ्टर दैट मैं उसको घंटा फर्क नहीं देता हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ. मैंने ये चीज Understood. अपने मैं ये चीज अपने बारे में सीखी, मैंने ये चीज अपने बारे में नोटिस भी की है. फॉर मी माई वर्क इज माई फर्स्ट लव. नथिंग इज Mm-hmm. मोर इम्पोर्टेंट देन मी बिकॉज आई हैव अ फैमिली जिनको मैंने दोज हैव होप, उन्होंने मुझसे कुछ होप रखा है लाइक अभी क्योंकि रिसर्च में जाना इंडियन फैमिली इट्स वेरी डिफिकल्ट, लाइक अलाउ नहीं करते हैं. ड्रॉप ले लो, डू इंजीनियरिंग और मेडिकल, जॉब पालो, प्लेस्ड हो जाओ, सिक्योर लाइफ, वही 9 to 5 वाला जॉब. मेरे लिए वो चीज बहुत बेकार है. मेरे लिए मेरा काम करना लाइक डूइंग रिसर्च, बीच बीच में कहीं जाने को मिल गया जस्ट टू काइंड ऑफ शो माय वर्क, दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर मी. किसी और के लिए ये चीज नहीं होगा बट मेरे लिए यही चीज है एंड मैं इसमें कोई चेंज नहीं करने वाला. Okay, सो then a scientist or a researcher you admire? रिसर्चर हूं मैं, एडमायर. No, no, a scientist or a researcher. There is some difference between scientist and researcher, right? यस Is हाँ. there any सो difference or not? scientist is someone like who is well established according to me. Researcher is kind of he's starting to tackle problems, and kind of trying to showcase his work so that people will recognize him. Like मेरे लिए अभी Okay. मैं खुद को एक क्या यूजी रिसर्चर बोल सकता हूँ, नॉट अ साइंटिस्ट. Scientist Then, is then you someone admire a scientist or researcher. I admire, the scientist, but Okay. being a researcher is a building block to reach that level. I can't admire my own self, I can just make myself better. I have to admire the scientist because they have reached that point. Now they are successful. I have to follow that path, and in that path, they were also a researcher only. So Okay. that's Recently, there is a movie like, have you seen Oppenheimer? Oppenheimer. No, I have not seen. I have to see it. I have my assignment, like English assignment. My professor has given me to watch that and make a report. So I have to watch it. That is very related to something this, right? Physics, like Yeah, atomic, something like that. But I am not good into these things. yeah, Yeah. Okay. So end of this conversation. Okay. yeah, Why? Because the Indian alumni, what I thought, I will only interview with the students who are studying abroad, right? But yeah. I mean that's yeah, but when I was going through a profile, you have also this kind of experience, right? yeah, Because you are also जो कि दोनों को compare कर सकते हैं, दोनों को thought को. yeah, You have also some kind yeah. of experience. That's why I approached you. And what is the last thing you want to say regarding this sector? Okay, because now, right now, uh, India is moving into a different era. Yeah, yes, We can say, right? There are so yeah, many plans. yeah, There are so many things going on in the STEM field, science, tech, yeah, engineering, yeah, or yeah, mathematics, you can say. yeah, So, if you want to say something to the viewers, yeah. what's a personal message? About the academia sector, Anything, anything yeah. you want So to say. I mean,
I will assume that a lot of people who will watch this will be undergraduates or like students, Mhm. because I don't think this is it will be a right video to watch for professionals because they know already Yes, how yeah, to behave. yeah, So yeah. And the yeah, so professionals is always. yeah, so basically, I mean, like make a plan, but more importantly, learn how to execute it, and try to gain experience earlier in your like career, so that like just a simple example I can give कि वो बाहर जा रहा है मुझे भी जाना है, बट यार मैं भी अगर बाहर चला गया तो मैं क्या किया, अल्टीमेटली कीप योर वर्क एज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। वो आपको दुनिया घुमा देगा पूरा, बट कीप दैट थिंग वर्क, वर्क को रखो, दुनिया को भूल जाओ। अब काम यहाँ पे है, बाकी सब वर्ड है, उस काम को फॉलो करो, उसके अंदर घुसो, वो दुनिया पूरा लाइक इट विल इल्यूमिनेट द एंटायर वर्ल्ड फॉर यू। Maybe we can say it in this like if you are going for higher studies abroad, right? या या Then don't think you are going. बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि उनको जाना है बस। हाँ एग्जैक्टली, लोग यही जा रहे यही हैं, हमें जाना है। यही चीज नहीं करना। आई मीन मेरी अभी एक सीनियर है जो अभी जॉन हॉपकिंस में गई है, तो शी इज ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग। वो मुझे सजेशंस देती रहती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो दैट इज द थिंग, यू आर गोइंग देयर फॉर योर वर्क। आप अभी अपना 5 साल पीएचडी का वहां पे करोगे, यू आर नॉट लाइक कि पहले 1 साल में बस मजे ही करूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आप पीछे रह जाओगे रेस में। अल्टीमेटली इट्स अ रैट रेस। इंडिया में वो चीज पूरा एविडेंट है, बट यूएस में भी यू आर ऑलवेज अंडर प्रेशर। लाइक प्रोफेसर को रहता है कि 2-3 रिसर्च पेपर पब्लिश करना पड़ता है 1 साल में, वरना जॉब चली जाएगी। देयर इज प्रेशर, बट इस प्रेशर को कैसे टेक इट एज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज एंड यूज इट एज योर स्ट्रेंथ। जब तक ये स्ट्रांग नहीं होगा, देन तब तक इसका थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस स्ट्रांग नहीं होगा। तो मेंटालिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसको पहले मेक इट स्ट्रांग, देन jump into anything else. Okay. So thanks for your time. So Yeah, now it's sure. time to wrap up. And Yeah, I hope when you will like get that opportunity to go abroad and yeah, for your PhD, then yes. we will do the next round with you. Yeah, in ODR. Will in ODI also that is different. We can do it in the middle of this path, but Yeah, this is the yeah, second round when I will see you next 2 years or means after 2 years or 3 years. yeah, I will try to a little bit deep into means what is your thought change. yeah, exactly. Because when I will do this kind of podcast, then first I will watch it, Yes, then yes, I will yes. relate the questions and relate your answers, how you Yeah, are changing. yes, Maybe yes. also I will also try to change myself Yeah, to yeah, ask the right yes. question to you, right? This Yes, is the yes, time of yes. things. Yes, yes. We are always evolving ourselves. Yes, yes. So did the things. It was nice Yes, talking to you, and it was nice meeting you. yes, yes. Thank you. Jai Thank you. Yeah. Jagannath. Jai Jagannath. Thank you.